Good evening, all. We'll start shortly. All right, so welcome all in our weekly webinar, Market Masterclass with Religare. Some of you know, and for those who are joining us for the first time, so this webinar is all about our preparation for the next week, how we should see the markets, the key indices, Nifty, banking index, sectors that are looking strong, where we are seeing fresh weakness, stocks to focus on. Everything we'll cover in next 20 minutes, followed by the Q&A session. So in case if you have any questions related to any particular sector, theme, we'll answer those query during the Q&A. There's a question mark button in front of your screen. All you need to do is just press that button, write your questions and send it to us. तो आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में। और इस वेबिनार का बेसिकली पर्पस क्या है कि हम नेक्स्ट वीक के लिए तैयारी कर लें कि किस तरीके से मार्केट अभी अलाइंड है और किन चीज़ों पे अपना फोकस होना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं अगले 20 मिनट में। और उसके बाद एक क्विक फीडबैक पोल और कोई भी सवाल है आपका रिलेटेड टू मार्केट्स, Q&A सेशन होगा लास्ट के 10 से 15 मिनट में। कोई भी सवाल है आपका, लिख कर आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन मार्क साइन के साथ आपका एक बटन होगा Q&A के लिए, उस पर आपको अपने सवाल को लिखकर पूछना है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट much delay. So first, disclaimer that it's not a trading or investment recommendation. It's basically our observation based on the recent market action. So before you make any decision based on the information shared, please do check with your financial advisor. So this is how markets ended this week. So as you can see that benchmark front weakness, roughly around 1% kind of a cut for both Nifty Sensex. Sectoral move was largely negative, but yes, we had media, auto, pharma, financials, banking. They somehow managed to buck the trend and ended slightly on the positive note to flat note. The major culprit was IT, 8% cut, while other sectors, from realty to FMCG, roughly around 0.4 to 2%. So largely, it was the IT dictated move, both in terms of sectoral move and on the benchmark front also. Right. Coming to the gainers, among the Nifty 50 names, iShares topped the list, 12% post numbers, strong move. Same holds true for SBI, 12%. Shriram Finance, Apollo Hospital, Bajaj Finance. So all the companies wherein we saw decent result updates were among the top gainers. Again, last week, if you remember, the top 5 losers were all IT names. This time around, 4 names from the IT pack and 1 from the metal space, Coal India, right? So this is how the market ended. तो ये पूरे वीक का एक लेखा जोखा है, पूरे हफ्ते में क्या हुआ है। तो इससे क्या समझने को मिल रहा है कि इंडेक्स में तो कट आया ही आया, सेक्टोरल फ्रंट पे मिक्स था। कैसे था कि आपको 5 सेक्टर यहाँ पे राइट साइड पे गेनर्स के साइड पे और 5 लूजर के साइड पे भी, बट जो लूजिंग के साइड पे आईटी का नाम है 8% के कट के साथ। ये बेसिकली मेजर रीजन रहा मार्केट के प्रेशर का, जिसकी वजह से हमने देखा कि 26,000 को क्रॉस नहीं कर पाए और क्लोज किया करीब 25,470 के पास। राइट, तो आईटी की वजह से ये नेगेटिविटी देखने को मिली। बाकी गेनर्स लूजर्स में आपने जैसे ऑलरेडी देख लिया, निफ्टी 50 में भी दोनों साइड पे आपको अच्छी पोजीशनिंग देखने को मिली। तो जो बढ़े वो लार्जली वो नाम हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए, उसका इम्पैक्ट हमने देखा स्टॉक प्राइसेस पे, जो कि सस्टेन भी हुए गेन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वीक। सो वी वर हियर
right, last week, and we were discussing about defending this area, uh, this both uh, 50 EMA and 20 EMA zone. So initially, yes, market did well. We reached closer to 26,000 mark, our area of resistance, but we could not surpass, and followed by this sharp decline in the two trading sessions. So again, we have breached the short-term averages. If you remember earlier, we've discussed about this zone 25,400, somewhere here. If Nifty fails to hold this, then this gap, this entire space, which fills around 25,100 mark, seems possible on the downside. On the higher side, 26,000, that's the major hurdle. Prior to that, obviously 25,800, then 26,000 will continue to be the major hurdle, and then the record high zone. Where on the basis of the price action, what we are anticipating, see, banking is still holding strong. Obviously, we'll discuss that in detail in the following slide. But in case if the global market continue to reel under pressure and IT also participate, then probably filling this daily gap, this zone, which we saw post the US-India trade deal, is likely, more likely. तो देखिए, ये जो पूरे हफ्ते का मूव है ना, कि हमने लास्ट वीक तक ठीक ठाक बंद किया था, इस हफ्ते भी इनिशियली हमने बढ़ा, 26,000 को क्रॉस नहीं किया, बट ठीक था कि अपना ऊपर गैप अप खुलते थे और उसके बाद एक रेंज में ट्रेड करते थे। 26,000 को क्रॉस नहीं किया, कोई बात नहीं, बट जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिसकी वजह से डिक्लाइन आया आईटी में, वो पॉजिटिविटी, वो टोन जो दिख रही थी कि कंटिन्यू होते हुए, वो पूरी फेड आउट कर दी। और अब क्या दिख रहा है कि अगर 25,400 को डिफेंड नहीं किया हमने, तो ये जो गैप है, देख रहे हैं आपकी, यहाँ पे लास्ट वीक में हमने बात की थी कि यहाँ था मार्केट यूएस इंडिया ट्रेड डील से पहले, और उसके बाद सीधा खुले थे हम यहाँ पे, मीन्स हाई तो ऑलमोस्ट हमने रिकॉर्ड हाई बना ही दिया था। और तो ये जो एरिया पूरा गैप का, उसमें से आधा पार्ट तो हमने, थोड़ा सा पार्ट तो पहले ही फिल किया था। अगर ये 400 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो पूरा फिर, मतलब मान के चलिए कि 25,100, अगर 25,400 ब्रेक हो जाता है तो 25,100 के लिए मार्केट तैयारी करेगा। उससे पहले जो आपका लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है 25,200 पे, उसको भी कोशिश करेगा डिफेंड करने की। बट टोन नेगेटिव हो गया है साइडवेज से पॉजिटिव से आफ्टर दिस डिक्लाइन, just because of IT, right? This is banking index. So banking, still we are very close to record highs, no doubt. Today's session was marginally negative in comparison to what we were seeing earlier. Means earlier we were seeing that banking was holding strong this 60,500 mark. As you can see, that the last 4-5 days of very tight range consolidation. Today we have surrendered that area. So this 20 EMA, this will be the first area of defense around 60,000 mark. But the major, again, here also will be the recent swing low, close around 25,600. Why I'm saying this? Because in case if we fail to hold this area, then this gap in banking index also might also get filled, right? On the higher side, 61,000, 61,500 means almost the recent high 60,900 was exactly the zone, and then 61,500 is something the market is going to attempt. So देखिए, बैंकिंग अभी भी ठीक है, मतलब अगर मैं निफ्टी से कंपेयर करूं तो गिरावट यहाँ पे भी फ्राइडे के दिन पे आई है, बट उस तरीके का प्रॉब्लम अभी तक नहीं दिख रहा है जिस तरीके से हमने देखा है कि दूसरे सेक्टर्स में प्रेशर है। तो बैंकिंग में आपको 59,600 को ध्यान रखना है, उसके नीचे जाएंगे तब जाके फिर ये गैप फिल होने का
रहेगा कि हाँ बैंकिंग भी आपका वीक हो गया, तो आईटी से तो हम पहले ही परेशान है, तो फिर वो बैंकिंग भी आपको परेशान करेगा अगर हमने 59,600 को सरेंडर कर दिया, उसके नीचे क्लोज कर दिया। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको इस चीज को जरूर ध्यान रखना है कि 59,600 के नीचे बैंकिंग में भी पॉसिबली आपको फॉल कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा, राइट। लेट्स मूव टू द स्टॉक्स वेर इन वी आर सीइंग स्ट्रेंथ. So Industar, we have discussed this multiple times. So basically, it's very important in a market like this, where almost every alternate week it gives you the feeling that we are set for a new record high, and it completely changes its course in the following session. So stock like Industar, wherein post this consolidation range breakout, there was the marginal consolidation, and this week it was the trend resumption, means the stock has reclaimed the record high, and crossed the previous swing high as well. So everything is aligned that even if, let's say, market remain under pressure, it is likely to hold strong or at least show relatively high strength. What it means, that it might not fall or go range bound when let's say the market corrects further, then possibility of consolidation or maintaining its positive tone is still high. तो देखिए, जब मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन हो ना कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फिर जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हो स्टॉक में, सेक्टर में, उनमें ही रहना समझदारी होती है। बिकॉज थोड़ा भी अगर आपने गलत सिलेक्शन किया तो मार्केट पनिश बहुत स्ट्रांगली करती है, खास तौर से गिरते टाइम पे। अब 2 वीक तक पहले तक आईटी स्ट्रांग बना हुआ था, अचानक से जो चीजें अनफोल्ड हुई फॉर द आईटी सेक्टर, जिसकी वजह से एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। अगर अनप्रिपेयर्ड रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बट यहाँ पे जो स्ट्रेंथ दिख रही है आपको इंडस्टार में, कि एक काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक पॉज हुआ था ब्रेकआउट के बाद, और फिर दोबारा से इसने अपना स्पीड पकड़ा है, तो यहाँ से एंटिसिपेशन है कि ये मूव कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं फॉर बुलिश साइड ऑफ पोजीशंस। ठीक है, नेक्स्ट NTPC. So NTPC, last week we discussed about power grid. I'm not sure whether you can recall that or not. Power grid was among the top performer. uh, a consolidation or a corrective phase breakout also. Similarly, NTPC, after this very tight range consolidation breakout, is currently witnessing a pause breather. Why we are talking about NTPC? Because at least, as you can see, that we have multiple supports to look at in case if market, let's say, go for correction. So for NTPC, this 250 to 40 zone might continue to act as a strong base, right? In case the market shows strength, then it can gradually inch toward this record high zone also. So relative strength, at the same time downside capped, that's very important thing to watch out for, especially in the current market scenario. तो देखिए, जैसे कि हम बात करें कि एनर्जी, बैंकिंग, ऑटो और सेलेक्ट मेटल्स, ये आपका अभी फोकस एरिया होना चाहिए अगर आप पॉजिटिव साइड पे पोजीशन बना रहे हैं, राइट। तो ये सेक्टर जहां पे की स्ट्रेंथ दिख रही है, और उनमें से एनटीपीसी, जिसने की एक काफी टाइट रेंज पेनेंट इसका ब्रेक किया है, कॉन्टिन्यूशन फॉर्मेशन का,
और एक मार्जिनल ऑलमोस्ट फ्लैटिश क्लोज के साथ ये इस हफ्ते बंद हुआ है, तो एक जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग एक ब्रीदर दिख रहा है। यहाँ से इसका पोटेंशियल कि ग्रेजुअली सही बट 400 420 तक जाए, पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांग लगती है कंसिडरिंग द टाइट रेंज कंसोलिडेशन जो इसने एक्सपीरियंस किया है। वो नेगेट कब हो जाएगा, 340 के नीचे हम क्लोज कर देंगे यहाँ पे। तो अभी के लिए एनटीपीसी को भी आप अपने लिस्ट में सकते हैं फॉर पॉजिटिव साइड्स ऑफ पोजिशनिंग। Lastly on the list, Union Bank. So PSUs post SBI results were buzzing. Uh, SBI definitely was leading from the front. Rest of the counters they were contributing, on the mixed uh, basis. Union Bank also post numbers. We are seeing bit of a consolidation after this sharp up move from roughly around 125 to 185. So after this consolidation, now we see a possibility of further trend continuation. Means a close above 185 can help the stock to inch toward 200 plus zone. So PSU Bank is not that only the PSU Bank, the banking pack altogether, uh, means ICICI, Kotak, uh, they are also holding strong. So one should plan their positions accordingly with focus on quality names irrespective of the market trend. देखिए मार्केट में जैसे हम निफ्टी की बात करें ना कि 25,400 के नीचे फिर 25,100 वाला प्रॉब्लम भी रहेगा, बट हम स्ट्रेंथ की भी बात कर रहे हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो अपना फोकस एरिया वही होना चाहिए कि मार्केट का हो सकता है कंसोलिडेशन थोड़ा एक्सटेंड हो, प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड हो, बट यहाँ पे कौन से क्वालिटी काउंटर्स हैं जो कि आपके फोकस में होने चाहिए, तो उसके बेसिस पे हमने यूनियन बैंक को ऐड किया है फ्रॉम द बैंकिंग पैक लिस्ट, राइट। सो नेट इन समरी, निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स, निफ्टी comparatively weaker 25,400. A decisive break can result in fresh decline towards 25,100. Upside, a close about 26,000 would completely change the market mood. How we are positioned? We are positioned mixed. Sectors to focus on. Then we have banking, metal, selectively, auto, and energy counters. On positive side, IT, FMCG, and reality, wherein we see weakness. Stock specific, we've talked about इंडस्टार, एनटीपीसी और यूनियन बैंक। तो देखिए इस सब चीजों के बीच में जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़ी चीजें हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला, निफ्टी बैंकिंग से वीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए कि इंडेक्स में क्या सिचुएशन है, और 25,400 के नीचे पूरा जो गैप है निफ्टी का, जो कि यूएस इंडिया ट्रेड डील वाला जो गैप आया था, वो पूरा फिल हो जाएगा 25,100 तक जाके। तो 25,400 के नीचे डेफिनेटली आपको क्या करना है आपको पता है, और ऊपर पे 26,000 अगर ब्रेक करता है तो फिर स्ट्रेंथ आएगी। अभी के लिए इंडिकेशन क्या है, अभी के लिए इंडिकेशन मिक्स्ड है, बिकॉज एक जगह पे कि आईटी पूरा जोर लगाए हुए है नेगेटिव साइड पे, वहीं बैंकिंग स्ट्रेंथ की कोशिश कर रहा है, स्टेबिलिटी की कोशिश कर रहा है, बट जल्दी वहां पे भी क्लैरिटी आ जाएगी क्या हम 25,400 के नीचे क्लोज करने वाले हैं। अगर वहां पे कंफर्मेशन आ जाती है फिर वेट करने का कोई फायदा नहीं है, मार्केट से बहस करने का फायदा नहीं है, कोशिश करिएगा अपनी पोजीशन को थोड़ा सा रिड्यूस करने का, राइट। बट इन सबके बीच में सेक्टर्स जहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई है वो है बैंकिंग, ऑटो, एनर्जी और सेलेक्ट मेटल काउंटर्स। जहां वीकनेस है वो है आईटी, एफएमसीजी और रियलिटी, जहां पे कि आपको अवॉइड करना है। स्टॉक स्पेसिफिक हमने बात की, जहां पे स्ट्रेंथ दिख रही है अपने को इंडस्टार, एनटीपीसी और यूनियन बैंक। So this is it from the presentation. Let's do a quick feedback poll. So एक feedback आपका चाहिए कि कैसा लगा आपको सेशन, एक
शॉर्ट सेशन हमारा मार्केट को लेकर, और उसके बाद जो भी सवाल हैं आपके, यू कैन स्टार्ट पोस्टिंग देयर क्वेश्चन यूजिंग दैट Q&A बटन. तो जिनका फीडबैक हो गया है दे कैन स्टार्ट पोस्टिंग देयर क्वेश्चंस. जिनका फीडबैक नहीं हुआ है जल्दी से फीडबैक भर दीजिए और अपने सवाल को लिखकर पूछ सकते हैं अब आप. We are almost done with the feedback. All right. Let's start now with Q&A. कोई भी सवाल है आपका, जो क्वेश्चन मार्क करके एक बटन है Q&A लिखा हुआ है, उसको आपको प्रेस करना है, उसके ऊपर लिख कर अपने सवाल को अपने भेजना है. So first query that we have for from Mr. Snehansh, that 1 to 3 year duration we see for it down more. Okay, so we see, for IT sector, I understand the kind of decline that IT has witnessed in the recent week. Those who have made investment, especially into the IT counters, IT majors, or mid-cap IT names, it's a very sharp damage. But I feel it's too early to write them off on the basis of the recent development on the AI front, that everything is going to be different for IT servicing. So in case if your view is long term, means 1 to 3 years, what you have mentioned, the prudent approach is to look for accumulation in the quality names, from especially the large cap IT names and select mid caps. Okay, but your view should be at least 1 to 3 years, like what you have mentioned. So short term, in case if you are planning that any kind of a rebound or recovery trade, तो वो आपको नहीं करना है. आईटी में बेसिकली जो हमने अभी तक बात की कि आईटी, फार्मा और आपका रियल्टी, इनको शॉर्ट टर्म में अभी ज्यादा फोकस नहीं करना है लॉन्ग साइड के लिए, राइट. Okay, next we have Mr. Jayantilal, question on Inox Wind. So energy as a sector पहले तो बात की, जैसे कि हमने this sector is strong. It's just that the alternate energy counters, they are not seeing fresh traction. So be it Suzlon, Inox Wind, all these counters are basically witnessing correction or profit taking. Or Inox Wind, this area is important. The recent swing low around 100, 102, in case if we break, then probably this may result in further pressure towards 85 also. The bias would change in case if it crosses 120 and sustain. ठीक है, तो अभी के लिए 100, 102, that's very important to hold. जब तक 100, 102 का जो जोन है, जब तक वो होल्ड हो रहा है तब तक ठीक है. तेजी कब आएगी? जब 120 के ऊपर क्रॉस करेगा, तब जाके शायद आपको एक ठीक ठाक सा मूव आइनॉक्स विंड में देखने को मिल सकता है. Okay, Santosh, this question, Map My India and TCS. So, see, IT का तो हमने बहुत सारा बात कर लिया, that short term if you are planning, then you should avoid. In case if the long term, it's completely okay. And same holds true for TCS also, wherein Map My India,
Serious correction means from 1720 to 1220 in last this almost 4 5 weeks. So not a very good sign. Means a close below 1200 can result in further decline towards 1050 970. मीन्स अगर आपने 1200 को होल्ड नहीं किया स्टॉक ने, तो फिर ये करेक्शन और यू नो बढ़ जाएगी, जो कि स्टॉक को अपना रिकॉर्ड लो तक भी पुश कर सकती है। तो अच्छे साइन नहीं है इसके लिए। शॉर्ट टर्म का अगर बायस है तो 1200 का एक स्टॉप लॉस कंसिडर किया जा सकता है, और बाउंस के केस में अगर 1350 1400 के जोन में आते हैं तो एक बार को कोशिश करनी चाहिए पोजीशन को रिड्यूस करने की। तानाजी, वी हैव डिस्कस दिस इन डिटेल कि निफ्टी का क्या है नेक्स्ट वीक। तो 25 400 को ध्यान रखिए, अगर उसके ऊपर होल्ड कर पाते हैं, इफ वी मैनेज टू होल्ड 25 400 देन इट इज ओके। Market might make an attempt of a recovery with 25 800 26,000 being the strong hurdle or first hurdle, followed by the record highs. Downside 25 100 means 25 100 mark, the gap zone that we have on the daily chart, that's the major support. So largely 25 100 to 26,000. This 800 900 point for the entire week is something that we are seeing as of now. Any question? We still have few minutes to go. कोई सवाल है आप अभी लिखकर पूछ सकते हैं। Okay, what to do in mid cap and small cap? So this is important, of course, because earlier we were seeing that mid cap and small cap, they have also witnessed decent rebound. Mid cap still looks strong comparatively, and we are very close to the record highs for the mid cap index. Small cap is still a challenge, means 17,600, 18,000 for Nifty small cap index. That's the major hurdle. Until we break that mark, this sideways negative bias might continue. So avoid any aggressive buying in small cap space if the view is short term. If you are accumulating the quality names, post numbers, then it's completely okay. Utilize this correction, but be selective. Focus large cap, larger mid cap if the view is very short term for trading point of view. In case if you're investing selectively, you can choose from the small cap space also. So hope it answers your query. Okay, Swapnil has question on Avanti feed. So very strong move post this India US trade deal, and you cannot time such stocks because they are very highly volatile in nature, and after this strong surge roughly around 37% in this week, uh, possibility of a pause is high, and 13 and the 1350, that's the immediate support zone. So if your view is very short term, so 1350 rather should be your stop loss, because in case if it fails to hold this, then probably we may see further profit taking or a decline towards 1200 1250 zone or maybe lower. But positionally trend is still positive and it might continue to inch higher. But in a market like this wherein the index trend is weak, one should do maintain a trailing stop even in the profitable position. Okay, next we have Suresh on Chennai Petro. Chennai Petro still comparatively okay. It's just that from 940 to 870 we have already seen decent decline, but the trend has not reversed yet. 840 45, that's the important support zone. 845 to be precise. If you have a trading position, 845 should be the zone where you can consider maintaining stop loss. Upside 940 960
as the resistance area. So roughly around 100 points, 842 or 940 is the immediate range with potential of 960 to 980 in case if it manages to hold this area. Okay, so we have largely answered all the queries. So where to focus, what to avoid. तो हमने देखिए जिस सभी चीज़ों के बारे में बात कर लिया, जिनको कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है कि मार्केट में कोई भी व्यू या कोई चीज़ मैंने मिस की है, आप रेलिगेयर ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे जाकर दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं. एंड थैंक यू once again for joining in, and next week same time we'll connect again. Thank you.